Jai Hind everyone. Today's topic in SSB video series is thematic apperception test. Thematic apperception test is basically apperception means assimilation, किसी चीज़ को समझना. ओके, तो का सिंपल मतलब सुनने में परसेप्शन जैसा लगता है एंड मतलब भी लगभग वैसा है. आप इसको असिमिलेशन से याद रख सकते हैं. असिमिलेशन या अंडरस्टैंडिंग. थीम विच इज़ मेंट टू अंडरस्टैंड यू. मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि ये समझने से हमें हमारा कोई मतलब सॉल्व भी नहीं होगा. वट यू नीड टू अंडरस्टैंड विल अंडरस्टैंड दैट. नाउ बेसिकली इसमें वी हैव टू बिल्ड स्टोरीज. वी विल बी गिवन पिक्चर्स. टोटल जनरली number of pictures shown to you one after the other will be 12 and there will be certain amount of time given to it. वो आपको उतने ही टाइम में समझना है. इट टाइमिंग माइट चेंज. एक जनरल टेम्पलेट टाइम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बता भी दूंगा फॉर प्रैक्टिस पर्पस. अदरवाइज आप ऐसा समझिए, पहले स्टोरी क्वालिटी बिल्ड करने है आपको. अगर ये थीम समझ में आ गया तो एवरेज टाइम यू विल बी एबल टू मीट. आप टाइम से पहले ही कर लिया करेंगे. दैट इज माई प्रॉमिस टू यू. तो हाउ टू बिल्ड स्टोरी. फर्स्ट ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा स्कैन द पिक्चर कंप्लीटली and you have to do it quickly. At times, picture might be hazy. This is another trick. Pictures will be hazy. जिससे there will be lot of pressure on your eyes and it will not be very clear क्या है पिक्चर में, कौन खड़ा है कौन बैठा है. बेसिकली आपको you have to identify who is the lead character. कोई भी फिल्म होती है उसमें कोई लीड रोल में होता है, हीरो हीरोइन. ओके, आपको यहाँ पे एक ही डिसाइड करना है कि इधर इट विल बी अ लेडी और इट विल बी ए मेल. तो आपको यू हैव टू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और यहीं से आपकी स्टोरी की नींव गढ़ी जाएगी. विल बी फाउंडिंग स्टोन फॉर योर स्टोरी. इफ़ यू आइडेंटिफाई मेन कैरेक्टर और मेन कैरेक्टर के साथ एज, जेंडर, मूड का फॉर्मूला याद करके रख लो. इट इज़ अब्रीविएशन निमोनिक्स. सॉरी, आई हैव मेड इट फॉर यू. AGM. A stands for age, G for gender, M for mood. मूड में if everything seems very happy, every scene is very full of energy, then you can write it positive. सब हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं. अगर कोई रोग आ रहा है तो फिर आप यू विल फाइंड इट लिटिल सैड. मूड इज नेगेटिव, सैड. देन हैप्पी वाले में मूड इज हैप्पी और पॉजिटिव. देन अगर कुछ ऐसा यू कैन नॉट स्पॉट एनीथिंग वेरी अपेरेंटली, देन मूड इज न्यूट्रल. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले आप उसका लीड रोल का, कहानी में से मेन किरदार का एज, जेंडर, मूड निकाल लेंगे. यहाँ पे इफ़ यू राइट इट करेक्टली, लेट मी टेल यू, योर 50% जॉब इज ऑलरेडी ओवर. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन हरी बरी डोंट स्पॉइल इट. देन एक्शन ऑफ द मेन लीड कैरेक्टर विल डिसाइड द थीम ऑफ द स्टोरी. नाउ इमेजिन द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज यू. दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जो आपका मेन कैरेक्टर है, एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. if you find, just an example, if you find one guy of 60-year-old man and wearing farmers clothes, तो आपको उसमें you have to imagine yourself. If you would have been in the place of 60-year-old man who is a farmer, who looks like farmer, what would have been your action? farmer होते तो आप पे क्या एक्शन होते. आपको ऐसे इमेजिन करना. आपको ये नहीं लिखना कि आपकी उम्र के हिसाब से आप उसकी उम्र लिख दें
आप अपने जेंडर के हिसाब से, नो नो नो, यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ इनटू दैट स्टोरी, रादर अप्रोच शुड बी पे अटेंशन टू दिस थिंग, लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑन दिस। बहुत सारे लोग गलतियां यही करते हैं, कितनी भी एज है उसमें अपनी एज भी घुसा देंगे, वट एवर द जेंडर दे विल ट्राई टू कीप द नेम ऑफ मेल्स। ऐसा मत करिए, जो एक्चुअल चीज़ है आप मेक स्टोरी रियलिस्टिक, बस आपको एक्शंस अपने समझ के लेने हैं। जो भी लीड कैरेक्टर है, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ इन टू दैट कैरेक्टर, आप उसकी आत्मा में घुस के, डोंट टेक इट लिटरली, just to make you understand, I'm understanding, just get into the soul of the character, get into the character। अब ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूवी में, if actor is given a character of a old man, तो ट्रांसफॉर्म करके अब बाल ग्रे कर लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, वो अपने आप को उसके किरदार में रख के देखते हैं, तो जबरदस्ती नहीं घुसाते हैं, वो जीवन जीने लगते हैं। तो ऐसे आपको कुछ ऐसा इमेजिन, होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट। Gradually you'll understand what I'm trying to say. We'll see with the ample amount of examples. So please glue to the screen and continue the journey of the video. Please don't switch off yourself from this point कि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो चलो बंद करके चले जाते हैं। Please try to pay some more attention and patience. You'll understand precisely what I'm saying. Now every story highlights some traits of main lead. अब आपके traits जो आपने उस कैरेक्टर में खुद को समझ के किया, वो आप ही के ट्रेड्स तो होंगे। वही ट्रेड्स देखने के लिए दिस अपरसेप्शन टेस्ट इज देयर। बेसिकली अपरसेप्शन टेस्ट इज देयर, इट इज डन इन हॉस्पिटल्स आल्सो विद पेशेंट्स टू कैरी आउट साइकोलॉजिकल टेस्ट। so what doctors do, they give forms to the patients, and they show them pictures, and they write the stories. A similar exercise is carried out in hospital also for certain tests, and it is to find out what are the hidden needs, hidden emotions, hidden desires, aspirations of the person। बेसिकली आपके, ये आप समझिए कि जो आपके ट्रेट्स हैं, पहला तो आपके चेक होंगे इसमें कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा है। देन व्हाट आर योर हिडन नीड्स, एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, दे डिटर्मिन योर थिंकिंग, एंड दोज थिंग्स विल पॉप अप वंस अ पिक्चर इज गिवन। वो आपके अंदर की भावनाएं जो है ना, वो आपके निकलेंगी। दैट इज व्हाट साइकोलॉजिस्ट वांट्स टू सी, क्या है अंदर, यही तो टेस्ट है सारा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग साइंस बिहाइंड इट। तो टोटल आपकी 12 स्टोरीज होती हैं। टाइम मैंने डेलिबरेटली मेंशन नहीं किया है, सो दैट कि आप उस टाइम से पहले ही कर लें तो आपको उतना टाइम ना लगे। एंड then one of the most important section of the entire SSB process of as far as psychology is concerned is these stories. That plays a very important part. It carries a good weightage in the entire scheme. So now story should be practical and realistic. बहुत उसमें ज़्यादा heroism, and you don't have to make a South Indian story and South Indian movie story, masala story, or Bollywood masala story. You have to be practical and realistic. ऐसा नहीं हो सकता कि you are writing कि your main lead has nullified 20 odd goons or terrorists और करके। be practical. We have to be realistic. And then if a scene is of jungle, you cannot make story which doesn't depict of jungle। या आप उसमें बता रहे हो कि पिक्चर में इट इज शोन अ थिक जंगल एंड देयर इज नो रोड, देयर इज नो नथिंग इज विजिबल, और आपने मनगढ़ंत एक कहानी विच यू हैव ऑलरेडी मेड एट योर होम, एंड you are forcing that story on your paper,
आप बता रहे हैं कि नहीं वो ट्रैफिक जैम लगा था, so that thing will not work. Okay, so story has to be very realistic. Next is, अगर मेन लीड कुछ एक्शन लेता है, उसमें सिंसियरिटी एंड प्लानिंग should be very apparent. So your main lead should be able to plan the activity. He should be sincere enough, and then what things have to be observed. Now see the dress of the people. They might be wearing gowns of doctors. They might be wearing dress of the farmers. They might be in the uniform of the school. So you have to, and then what they are doing, they are walking, they are standing still, they are crying. Those gestures have to be seen carefully, and then get the clue from the background. Background will, like, there is hilly terrain, or there is jungle, or there is traffic jam, or they are sitting in the house setup. So those things have to be brought out in the story. Story should commensurate those things. Story cannot be standalone and it is running in isolation. All the dots should be connected. Now next is, main lead should not be self-centric and reward seeking. कि वो he is doing these things to get something, or to get appreciation, or to get some fame. He should not also be self-centric, that he flees from the place and he's not bothered about people. Then now coming to story one, which we are taking as an example, you might be seeing this story. So what you see now, you can take a screenshot, you can pause the video over here, and you can make your own story in your own time. Because this story I'll be discussing, there are multiple stories which can be made by seeing the picture. One story which you can make, I will give one example. There are, believe me, there are hundreds of the stories you can imagine on single picture. So there are different people who will make different stories. So now, coming to the story, we are imagining him, this boy, as lead character. So now his age is 20 years. So we have come, as we had discussed, AGM, age, gender, mood. So age is around 20 years, gender is male, mood is neutral. Now you imagine, ये कैरेक्टर है, आपको किरदार दे दिया गया, ठीक है, जो कि पिक्चर से वी हैव गॉट. नाउ यू इमेजिन योर सेल्फ इन टू दैट कैरेक्टर. आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आपका जेंडर कुछ भी हो सकता है, और आपका भी मूड भी कुछ भी हो सकता है. बट दिस इज द मूड ऑफ द कैरेक्टर इन विच यू हैव टू गेट इन टू. आप उसमें घुस जाओ. नाउ यू राइट द स्टोरी. नाउ दिस गाय इज, वी आर इमेजिनिंग कि ही इज यंग सोशल एक्टिविस्ट. उसका एक अपना फेसबुक पे पेज है, एंड ही डज हेल्प पीपल. हिज नेम इज आदित्य. नाम भी आजकल के ट्रेंडी नाम रखे जो आपके दोस्तों के नाम होते हैं. अपनी क्लास में ही लोगों के नाम उठाओ और वो लिख दो. डोंट ट्राई टू राम, श्याम, मोहन, दोज आर वेरी ओल्ड नेम्स. प्रैक्टिकली रियलिस्टिक जो आजकल के नाम हो रहे हैं, आदित्य, अथर्व, आरव, हैरी, whatever names are trending, you pick up the names from your surroundings. He sees an injured person on the road. He sees an injured person on the road. Now he took him to the hospital. They rushed, and he was admitted in ICU. A team of doctors who we saw in the picture, they are saving his life, and they praise Aditya for his efforts, because uh, in golden hour, this injured person was taken to the hospital, and thus we could save his life. Now you can say these a team of, this is team of doctors, and this is the patient who is lying over here, on which surgery is being done. And this is the guy whom we have told he is social activist, and you can see the pride
in the face of this boy, and this is the team of doctors who are operating surgery to save him. Now he is fit and fine, and everybody is happy. Okay, so you might have understood precisely. बहुत ज़्यादा, don't put in too many problems at a time. Otherwise, your story will be unnecessarily complicated and it will be very difficult to understand, and you will open so many fronts in the battle. ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है. प्रॉब्लम आप सिंपल रखिए. और उसने क्या किया? प्रेफरेबली दिस इज द स्मॉल थिंग कि आप अगर कोशिश करें कि people should not be from one particular religion, they can be of different community. आप ट्राई करिए, अगर आपके क्लास में डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से लोग हैं तो आप सबको कैरेक्टर के नाम दीजिए. Story 2 is, you can see now what you spot first. You can pause and you can assimilate. Otherwise, I'm going ahead with the solution. There is a lady who we can see, most possibly she is crying, and then one guy who is inside the room, he's lying. One piece of blanket we can see, and there are certain pillows. We can make out that he's not well, and there is a window. That is all we can see, and at the door he is crying. Now what the story we can make on it, so let's see. Now lead character is this lady who is age, gender, mood. Age is 32, gender is female, mood is little stressed because she is crying. Now we are saying she is wife of an army officer. Her name is Alina. Now you might be male, you might be female, your age might be different, but you have to imagine yourself into this character जो आपने पीछे पिक्चर में देखा. Okay, accordingly write your story. Now we imagine her husband was posted in Ladakh and got injured during Galwan conflict. This Galwan conflict happened between India and China. A lot of soldiers were injured. We are mentioning that thing. You can write anything. It can be story from past or maybe from Kargil war. That doesn't matter. Story can be of any time, any. Now he is admitted in military hospital. Now he is admitted in military hospital for his treatment. So she is in stress, but she is also proud of her husband because he has contributed to the nation and he was safeguarding nation. So whatever injury he has sustained, he is undergoing treatment. This lady is, though she is in tears, but at the same time she is proud also. People, okay, we can go back to the picture again. Now you can go through this picture again and see. Okay, now story 3rd, we can see little elderly lady. She is standing here near the window and they are discussing some serious topic. Now this is a young boy. He's also thinking something and they are discussing some serious topic. So this is the entire story, and he seems educated. Because of the appearance, we can realize that they are pretty educated and sensible. Now this young man is our lead character. His age, we are assuming 28, gender male, mood neutral. Now his name is Zishan. Okay, and now we are making a story around that he is medical officer. Rather, we should always write story in the past. So he was medical officer posted in district headquarters of any particular place. You can write any name.
write name of your hometown or anything you can write down. Now he came to know from his mother, that elderly lady is his mother, that there was a serious disease in his village which was spreading to people at a very fast pace. Okay, so basically his mother called him up and told the entire story. That's why they were a little serious. That problem is serious and he needs to contribute. This is the time when he can serve his own people. So he immediately coordinated with the nearby primary health center, nearby hospital. He team came and took samples for ascertaining what is the disease, and then he started treating affected people. And, in few weeks, situation was under control, and everybody thanked a doctor for his quick response and for his uh, contribution to the society, to the people of his hometown, and his mother was also. You can build a story around it. These are the main points. So we have seen enough examples, 3 examples had given. Now there is a bonus tip. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सही समझ लें, it will help you to crack this riddle of TAT entirely. आप TAT चलते फिरते बनाने लग जाएंगे. So whenever you are walking on the road, you are traveling, you are out in the open, you will see people doing certain things. Like you will see people, they are walking, chit chatting, they are talking over phone, going for refueling. कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, कोई बच्चा घुमा रहा है, कोई सिनेमा हॉल के बाहर जा रहा है, कोई मॉल जा रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे जा रहा है. वेर एवर यू गो यू फाइंड पीपल. जस्ट इमेजिन रेक्टेंगुलर फ्रेम अराउंड इट. आप एक फ्रेम बना लो इमेजिनरी, और उसमें लोगों को देखो. इसमें कोई होगा जो बच्चे के साथ पार्क जा रहा है. यहाँ पीछे सनसेट इज हैपनिंग. बिहाइंड इट देयर इज झूला इन द पार्क. ओके, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग स्टोरी. क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप बनाओ एजीएम. अब इसमें लीड कैरेक्टर आप दे दो इसको. जस्ट इमेजिन. अब आप इसको बोल दो कि दिस मैन इज 30 year old male, mood is positive, happy. Storyline is he just imagine one story. Today this man went to pick up his son from the school, and he has desires to make his son, he wants to make his son a big lawyer. And so he thought, okay, before going to home, let's go to park. And they went to the park. Two of father and son, they both played for some time, and they are coming back. ऐसे ही करके सिंपल स्टोरी. होगा क्या? इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. इट इज लाइक हैबिट फॉर्मेशन. So it is nothing but it is हैबिट फॉर्मेशन. आप चलते फिरते, खाते पीते, इवन इन द वॉशरूम, यू विल स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज. TAT will be the easiest thing before you appear in your SSB TAT. तो बिल्कुल आप ये कंठस्थ कर लें, मेरी बात को ध्यान में रखें. आप चलते फिरते स्टोरीज बनाना शुरू कर देंगे. दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. प्लीज डू इट एंड यू विल सी द डिफरेंस इन अ वीक. So I will make another video on this for more practice. Till the time, please go through these hacks, go through these tricks, and start making stories. And let me know through the comment section what is the issue that you are facing.